Dear student, today we have to study about the dimensions of physical quantity. Most important topic है. हमेशा नीट जे और सीटी में क्वेश्चन आते ही है. मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टेट बोर्ड में भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं. सो आज हम देखने वाले डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, उसके फार्मूले. अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला वी गो फॉर द एसआई यूनिट, एंड देन आफ्टर द एसआई यूनिट वी कैन find out how to calculate the dimensional formula for any physical quantity. तो आपको बस उसके लेटर्स याद रखने. अगर मास रहेगा तो मास रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल, and then time represented by capital T, current represented by capital I. So these are the notations you have to remember for writing the dimensional formula. So let's start. So most importantly we go for the first formula. So what is the formula of speed? Speed is equal to distance upon time, and we know that the distance is the physical quantity that is measured in terms of meter. So the SI unit is meter, and time we know that it is measured in second. We can write meter second raised to -1. So now we have to calculate the dimensional formula. तो dimensional formula तो बहुत easy है, बस आपको observation करना है. बहुत simple observation है. Whenever we writing the dimensions, so write down the powers of that unit. जो भी unit दिया है उसका powers लिखना है, और आपको representation पता होना चाहिए. mass का representation m लेना है, length का l लेना है. So look at here, मीटर इज गिवन. सो मीटर का रिप्रेजेंटेशन रहेगा एल, एम फॉर मास एंड टी फॉर टी. सो मैंने आपको अभी डेफिनेशन बोला. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन? डायमेंशन का डेफिनेशन बहुत सिंपल है. जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो भी पावर है वो लिखना है. सो एम है, एम रेस टू कितना है 1 है, सो दैट इज, सो मीटर रेस टू 1 है, सो दैट इज एल रेस टू 1. मास तो एब्सेंट है, केजी means 0, और टाइम कितना प्रेजेंट है, t raised to -1. so we write down the powers of that physical quantity. बहुत easy है. Now we go for the second. So tell me, what is the formula of velocity? Can you remember the formula of velocity? It is very easy to remember the formula of velocity. So that is displacement upon time. So displacement also one more physical quantity that is measured in meter. So meter per second, or we can write meter second raised to -1. So tell me, what is the dimensional formula? So dimensional formula तो बहुत easy. Now it is dimension SI unit of speed and velocity both are same. So therefore the dimensional formula becomes mass absent है, L raised to 1 and then T raised to -1. So what is the difference between डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए. द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. रिमेंबर दैट डिस्टेंस मीन्स द एक्चुअल पाथ फॉलो बाय दैट ऑब्जेक्ट. मतलब आपको टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, टोटल पाथ काउंट करना है. एंड व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? Displacement means that is the, you have to observe only initial and final position. The shortest distance between the initial point and final point, it is called displacement. And more important observation, distance is the scalar quantity and displacement is the vector quantity. So next dimension है, we have to calculate for acceleration. Very easy. So formula of acceleration is equal to velocity upon time. And we can make the very simple definition of acceleration, that is the rate of change of velocity. The rate of change of velocity. Rate means the time at the denominator, and change क्या हो रहा है, velocity. मतलब velocity change होगा with respect to time. It is called acceleration. What is the SI unit of this physical quantity? We know that the velocity SI unit is meter per second, and again at the denominator second. So denominator में क्या आएगा आंसर? second का square. So it becomes meter per second square. Or how to write? Meter second raised to -2. So most importantly, how to calculate the dimensions? मैंने आपको अभी बोला कि dimensions अगर calculate करने हैं तो आपको लिखना है MLT. M represent the mass, L represent करेगा length को, और T represent करेगा time को. So how many mass? Mass तो absent है acceleration में. हाँ, length दिया है कितना, m raised to 1 है. And what about the time? Time second raised to -2, so that is T raised to -2. So we complete the 3 most important physical quantities along with their formulas. Then we write down their SI unit, and most importantly we complete the dimensions. So take the screenshot of the given all 3 examples. Then we go for the next example. So next.
सो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स. बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद रखना है. व्हाट इज बाय फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो बहुत बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो व्हाट इज द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट तो बहुत सिंपल है, यू कैन रिमेंबर द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. सो दैट इज मास मेजर इन केजी and acceleration measure in meter per second square. Remember the SI unit of acceleration. What is the SI unit of acceleration? Meter per second square. Then we can write down the force SI unit is kg meter per second square, or force is measured also in Newton. So this is the one more SI unit you have to remember. So next we have to calculate the dimensional formula. तो डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है. सो राइट डाउन द एम एल टी. एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम. उसके बाद उसका पावर लिखना है. सो व्हाट इज द पावर ऑफ केजी? 1. व्हाट इज द पावर ऑफ मीटर? दैट इज 1. एंड व्हाट इज द पावर ऑफ सेकेंड? दैट इज 2. लेकिन वो डिनोमिनेटर में, अगर वो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बनेगा उसका आंसर? सेकेंड रेस टू माइनस 2. तो आपको ये नंबर सिलेक्ट करना है. दैट इज टी रेस टू माइनस 2. सो रिमेंबर द डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स इज m1 l1 t minus 2. Simply you can remember 1 1 minus 2. आपको ये याद रखना है. बोथ IMP dimensions है. So many times it's required to calculate the dimension formula for different physical quantities. So now we go for the next, weight. So formula of weight is again very simple. That is mass into acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. So we know that. So again the SI unit of both are same. So what is the SI unit for weight? That is kg. और acceleration का हमें पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So according to that the dimensional formula इसका भी सेम आ जाएगा, m1 l1 t minus 2, क्योंकि SI unit दोनों का सेम है. तो आपको और एक क्वेश्चन करना है अच्छे से कि जो भी कोई फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं कि उनका SI unit और डायमेंशन सेम है, तो उसके एग्जांपल आपको याद रखने हैं. So from here, which example you have to remember? So same SI unit and dimensions. What are the physical quantities you have to remember? First force, remember the force. उसके बाद weight. उसके बाद tension in the string. Tension in the string. उसके बाद है आपका thrust. उसके बाद है आपका viscous force. Then normal reaction, remember all having the same SI unit, that is Newton, और we can write down kg meter per second square, और सबका डायमेंशन भी सेम है. तो ये आपको अच्छे से करना है, इसको नोट डाउन करना है. फार्मूला तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, बहुत इजी टू रिमेंबर. सो वी गो फॉर द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी. So that is work done. So what is the formula of work done? बहुत simple है. अगर कोई भी object है, now this is the object, I am moving this object from point A to the point B, means how much force applied by me for that displacement and how much displacement of the particle, that product is nothing but the work done. So it becomes force into displacement. So we know that force, SI unit क्या है force का? So SI unit of force हमें पता है, that is Newton. And what is the SI unit of displacement? That is meter. Or one more SI unit is joule. So we can calculate the dimensions from here. So we know that what is the dimensional formula for force? Force का dimensional formula हमें पता है, that is m1 l1 t minus 2. And what is the dimensional formula for meter? Meter तो measure होता है l1. So what we get? So now we get the final answer, final dimensional formula, m raised to 1. Then L raised to 1 and L raised to 1. It becomes L raised to 2 and then T raised to minus 2. Remember the formula of exponential property we use here, m raised to n, and m raised to n equal to a raised to m plus n. So write down the base same times. बेस सेम होना चाहिए, तो इसको सिंगल टाइम्स लिखना है, और जो भी पावर्स है उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू उसका साइन कन्वेंशन लिख लेना है आपको. सो हमने यहाँ पे सिमिलरली L1 और L1 वैसे सॉल्व किया. L raised to 1 into L raised to 1, it becomes L raised to 1 plus 1, so it becomes L raised to 2. So in such way that by using the properties of exponential we calculate the two same system of unit in terms of 1. So this is the physical
This is the dimensional formula of work done. Next physical quantity, that is most important, torque. The formula is very easy to remember, force into perpendicular distance. We know that force measuring what is the SI unit of torque. तो SI यूनिट तो सेम आएगा, दैट इज न्यूटन मीटर और जूल. सो डायमेंशन फार्मूला भी उसका सेम हो जाएगा. सो रिमेंबर द डायमेंशनल फार्मूला फॉर टॉर्क इज m1 L2 t minus 2. सो टॉर्क और वर्क डन का SI यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला सेम है. रिमेंबर व्हाट इज मीन बाय टॉर्क. तो टॉर्क remember what it means by torque. So torque means that is the quantity, physical quantity which is responsible for the rotational motion. Uska best example है open the door and close the door. So whenever we open the door, what happen, we apply the force in this direction, and now this is the door. So this is the distance from the application of force and the fixed point. So that distance is perpendicular to the direction of force. So therefore remember the formula, force into perpendicular distance. This is the most important physical quantity. You have to remember the how many physical quantity which have the same SI unit and same dimensions. So remember those physical quantities, that is same SI unit, same SI units and dimensions. So what are the physical quantities? So first one is work, then torque, then total energy, then kinetic energy, then potential energy, then heat. So these are the some physical quantity which having the same SI unit as well as same dimensional formula. So take the screenshot of the given example. So now we go for the second. Next, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे. So next, impulse and linear momentum. Very simple formula of impulse. Impulse is denoted by letter capital J equal to force into time. Force into time. So whenever we apply the any object, that is the force, and it takes the time for displacement. So product of force and time is nothing but the impulse. What is the SI unit of both? So that is, remember the SI unit. फोर्स का SI यूनिट है न्यूटन और टाइम का है सेकेंड. सो देन वी कैन कैलकुलेट द डायमेंशंस फॉर द इम्पल्स. वेरी सिंपल. सो डायमेंशन ऑफ न्यूटन आपको याद रखना है. व्हाट इज द डायमेंशन? m1 L1 t minus 2. So then what is the dimension for second? t raised to 1. So what we get the dimension formula? बहुत easy है. So write down m1 L1 t raised to, यहाँ पे t raised to minus 2 है, plus 2 है. So minus 2 plus 1 कितना बनेगा नंबर? minus 1. So we get the dimensional formula for impulse. So next most important physical quantity is linear momentum. So remember the formula of linear momentum, mass into velocity. So both easy formula. So tell me the SI unit of linear momentum. SI unit is, so that is mass हम measure करेंगे kg में और velocity हम मीटर पर सेकेंड में. So what is the dimensional formula? So remember the dimensional formula for linear momentum is, dimensions is, so यहाँ पे MLT हमने लिख लिया और बहुत easy है. M for mass, L for length और T for time. So यहाँ पे देखना है kg how many times है? सिंगल टाइम्स है. So m1 मीटर भी सिंगल टाइम्स है L1 और T डिनोमिनेटर में अगर ऊपर जाएगा तो T raised to minus 1. So remember impulse and linear momentum both having the same SI unit and same dimension. So दोनों का dimension same है, अच्छे से इसको याद रखना है. So take the screenshot. We go for the next. So next physical quantity is angular momentum. बहुत simple है formula to remember. Radius multiply by linear momentum, that is denoted by letter P. And what is the formula of P? So we know that linear momentum equal to mass into velocity. So एक किसका product बनेगा? mvr. So we have to calculate the SI unit. So what is the SI unit of angular momentum? Very simple. Mass measured in kg, velocity meter per second, or radius meter that is meter square per second. So dimensional formula is, so dimensions for the angular momentum kg m1 L2 t minus 1. So this is the dimensional formula for angular momentum. So next, Planck constant. So remember the value of Planck constant, 6.67 into 10 raised to minus 34 joule second. So remember the SI unit of Planck constant is joule second. So how to calculate the dimensions?
सो वी नो दैट डायमेंशनल फार्मूला फॉर जूल हमने अभी कैलकुलेट किया उसको, वर्क डन का जो भी डायमेंशन रहेगा वही सेम रहेगा, दैट इज m1L2T-2. So already calculate the dimensional formula for work done, m1L2T-2. So from here we can use the dimensional formula, so that is m1 L2 t minus 2, and then what is the dimensional formula for second, t raised to 1. So यहाँ पे t raised to minus 2 और plus 1, तो क्या आंसर बनेगा उसका m1 L2 t minus 1. So this is the most important here, you have to remember the angular momentum and Planck constant both having the same SI unit and dimension, so both are the most important physical quantity. इसको अच्छे से याद रखना है. So remember the formula as well as SI unit, then you can calculate the dimensional formula, both easy. Next physical quantity, that is pressure. So what is the formula of pressure? Both simple है. Pressure means the normal force divided by area, and then stress means that is internal restoring force, internal restoring force divided by area. So both simple है. So what is the SI unit of both? That is similar आएगा. क्यों similar आएगा? क्योंकि SI unit of pressure क्या आएगा? बोलो जल्दी फार्मूला से. नॉर्मल फोर्स का SI unit न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर. सो स्ट्रेस का भी SI unit क्या आएगा? दैट इज सेम, मीन्स दैट इज फोर्स divided by area, so that is Newton per meter square. तो dimension same calculate होगा. So what is the dimension formula for both? So that is dimensions are, so we can calculate the dimension formula. हमें पता होना चाहिए dimension formula for force m1L1 t minus 2. Then what is the dimension formula area? That is L square. Area का ऐसा unit है meter square, so it becomes L square. So 1 L get cancel, 1 is remaining at the denominator, goes to numerator, it becomes negative. तो इसका नंबर बनेगा m1 L minus 1, that is t minus 2. So this is the dimensional formula for pressure as well as for stress, क्योंकि उसका ऐसा यूनिट सेम है. तो बहुत सिंपल है, आप इसको अच्छे से रिमेंबर कर सकते हैं. नेक्स्ट ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है एरिया और वॉल्यूम. एरिया तो बहुत सिंपल है, लेंथ इनटू ब्रीथ, and what is the formula of volume? Length into breadth into height. So all are measured in meters. So अगर लेंथ मीटर में, ये भी मीटर में, तो इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा? तो बहुत सिंपल है, आप इसका ऐसा यूनिट बता सकते हैं. व्हाट इज ऐसा यूनिट? मीटर स्क्वायर. सो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट भी क्या आएगा? सो नाउ ऑल आर मेजर इन मीटर, इट बिकम्स मीटर क्यूब. सो टेल मी द डायमेंशनल फार्मूला. So when we calculate the dimensional formula for area, so now here mass absent है, time absent है, only meter present है, that is L2, and now here the dimensional formula. So dimensions of volumes are m तो absent है, L present है, and T also absent. So remember these are the two most important physical quantity. Whatever may be the shape of the substance, either it is spherical, rectangular, cylindrical, whatever may be the shape, but the SI unit is always remains same, and according to that SI unit we calculate the dimensional formula for the area, and then go for the volume. So take the screenshot, we go for the next, that is the surface tension, and next one is the density. The most important formula is surface tension, force per unit length. सो नाउ एसआई यूनिट, हमने अभी देखा कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन, और लेंथ का मीटर. सो वी कैन कैलकुलेट द डायमेंशंस फार्मूला फॉर द सरफेस टेंशन. सो आपको याद होना चाहिए व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ न्यूटन. अब तक तो याद होगा m1 L1 t minus 2. Then dimension formula for length is L1. So L1 get cancel. So what we get the answer? That is m1 L0 t minus 2. So this is the dimensional formula for surface tension. Next physical quantity है density. It is denoted by letter rho. याद रखना है RHO. Rho is equal to mass divided by volume. So mass measure in, what is the SI unit? So we know that mass measure in kg, or then volume measure in meter cube. So we can calculate the dimensions for the density. So dimensions are, that is m1
L माइनस 3 T0, बहुत सिंपल है, kg 1 टाइम्स मीटर क्यूब 3 टाइम्स, बट रेस्ट हो जाएगा तो -3 बन जाएगा. सो इन सच वे दैट वी कैलकुलेट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी. सो हमने बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज कर ली है. आपको इसको रिपीट देखना है अच्छे से, सब फार्मूलेस को अच्छे से रिकैप करना है ताकि आप उसको आसानी से रिमेंबर कर सकें. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप अच्छे से फार्मूला रिमेंबर करोगे, ऐसा यूनिट याद रहेगा, तो डायमेंशन अपने आप आ जाएगा. बच्चे क्या करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेन एवर वी आर टीच वी ऑब्जर्व दैट so many students are try to remember the dimensions. It is not easy to remember the dimension. आप किसका किसका डायमेंशन याद रखोगे. सो सबसे बेटर और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको फार्मूला आना चाहिए. एज एन साइंस स्टूडेंट यू मस्ट रिमेंबर द फार्मूला, देन वी गो फॉर द एसआई यूनिट एंड आफ्टर दैट लास्ट में डायमेंशन. अगर आपको एसआई यूनिट अच्छे से लिख रहे हैं तो डेफिनेटली डायमेंशन आ जाएगा. डायमेंशन के लिए आपको क्या याद रखना है, बस उसका साइन मतलब लेटर्स याद रखते हैं. मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से, लेंथ को एल से, और टाइम को टी से, करंट को आई और ए से, टेम्परेचर को के और थीटा से. तो अगर आप इतने नोटेशंस अगर याद रखोगे तो डेफिनेटली यू कैन कैच दैट मोमेंट, आप अच्छे से डायमेंशंस कर पाओगे. सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितना हो सके इसको राइटिंग प्रैक्टिस करना है, एटलीस्ट 5 to 7 टाइम्स एक फार्मूला लिख के उसको प्रैक्टिस करना है, ताकि जो भी जिनको लगता है जल्दी याद नहीं रहता होगा तो वो 7 टाइम्स लिख के अच्छे से उसको कर सकते हैं. आई होप आप सभी को डायमेंशन अच्छे से समझ में आए होंगे. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है. अगर कोई डाउट है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लीज़ अगर आपको ये समझ में आ रहा है अच्छे से तो प्लीज़ इसको लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है. थैंक यू वेरी मच.